Good morning, students. So we all started with the chapter political parties and we were done with the major portion. Okay, we started with the first, that is why do we need political parties, wherein if you remember I asked you that you need to cram this definition. After that I discussed the meaning of the term partisanship, and then also I discussed what are the functions of the political parties. The next topic was why do we need political parties, and of course I had given you number of questions to answer. The second topic was how many parties should we have, under which we discuss multi-party system and two-party system. After that we started discussing national political parties, under which we discussed so many parties and what is the criterion to be called as national party and state party and who has this authority. After that we did challenges to political parties. So today I'll start with the last topic, that is how can parties be reformed. So we have already discussed that what are the challenges that is faced by a political party. So is it that we should continue with the problems and we should not think about the solutions? So let us look at some of the recent efforts and suggestions in our country to reform political parties and its leaders. So the first one is that the constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties, which is called as Anti-Defection Act. That is, once an MP or MLA gets elected to a particular party, he cannot switch on to the other party for his personal interest. So now the law says that if any MLA or MP has to clear or to change the party, then there are certain conditions. There has to be like 2/3 of the people, they should merge together, then only, that is they should have a problem with an ideology and not as such कि क्योंकि मुझे कोई दूसरी पार्टी बहुत पैसा दे रही है तो इसीलिए मैं जो हूँ वो अपना पार्टी जो है वो चेंज कर लेता हूँ. दैट कैन नॉट हैपन. ओके, सो एंटी डिफेक्शन का मतलब है दल बदलना. अगर आप एक पर्टिकुलर पार्टी से इलेक्ट हो जाते हैं तो अब ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन 15 दिन के बाद उस पार्टी को सिंगुलरली छोड़ सकते हैं. हाँ, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं. अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ बंच ऑफ पीपल इफ दे वांट दे कैन लिव द पार्टी, बिकॉज इसका मतलब कि उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है. द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी. और अगर कोई भी आदमी, कोई भी MP या MLA ऐसा करता है, देन ही और शी विल lose the seat in the legislature. The Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. तो इसीलिए अभी ये मैंडेटरी है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं who wish to contest election, they have to file an affidavit and they have to give all the details of the property and the criminal cases that is pending against them. And one information that is not in your book because it is very current, that सुप्रीम कोर्ट ने एक नया भी ये वर्डिक्ट पास किया है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई ऐसा कैंडिडेट होता है जो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू मेंशन दैट व्हाई, व्हाट वाज द नीड, कि आपके पास और कोई प्रोबेबल कैंडिडेट नहीं था कि आपने इस क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले पर्सन को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए चूज़ किया है. Okay, the Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections. Internal election भी होना बहुत ज़रूरी है and they all need to file income tax returns. Parties have started doing so, लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, वो लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं. इसके अलावा और भी जो सजेशंस हैं, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी के लिए कंपलसरी होना चाहिए कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करें जिसमें ये देखें कि कितने लोगों की अटेंडेंस रहती है, आर दे रियली अटेंडिंग द इंटरनल पार्टीज़. उनके अपना एक रूल बुक होना चाहिए, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़. एंड जो पोस्ट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो भी इलेक्शन के थ्रू होना चाहिए. लाइक इफ़ यू सी कांग्रेस का जो लीडर है, it keeps swapping the position keeps dwindling between Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, and they both are not a deserving candidate. तो ये जो आप पार्टी के लीडर भी चुनते हैं ये भी इंटरनल इलेक्शन से होना चाहिए. Okay, it should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates. Of course, we need to empower women. हमारा DPSP Directive Principles of State Policy भी यही कहता है. So they are saying that there should be a quota for women in the decision making bodies of the party. Okay, तो जैसे PRIs में
1/3 ऑफ द सीट आर रिजर्व, तो ये कह रहे हैं कि लोकसभा में भी होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी में भी 1/3 ऑफ वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना इज नेसेसरी. दिस वुड हेल्प in empowering women. There should be state funding of elections. The government should give parties money to support their election expenses. State funding होगा तो हम करप्शन को कर्ब कर पाएंगे. और ये कैसे करेंगे? जो पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एट्सेट्रा का यूसेज है, दैट कुड बी हेल्प बाय द साइड ऑफ गवर्नमेंट, या आप थोड़ा बहुत कैश से भी हेल्प कर सकते हैं. These suggestions have not yet been accepted by political parties, but if these are accepted, of course the system can be a bit corruption free. There are two other ways in which political parties can be reformed. One, people can put pressure on political parties. Democracy है तो people से बढ़िया कोई mechanism हो ही नहीं सकता है. कैसे करेंगे? वो petitions file कर सकते हैं, वो truth को बाहर लाने में help कर सकते हैं, movement start कर सकते हैं, agitations, protest हो सकता है. And if you are not well versed or acquainted with the legal terms or the mechanism of the law, you can of course take the help of the NGOs, the civil society organization, the pressure group, and the media is always there to bring forth the truth. And if political party starts feeling that if they are going on like this they would lose public support, of course they would try to reform themselves. So the quality of democracy in any country depends on the public participation. अगर public aware है, ये हिंदू मुस्लिम ये सब से बाहर निकल के अगर वो गवर्नमेंट के बारे में ये सोचे कि हमें और हमारे पास और भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में अदर देन ओनली रिलीजियस एस्पेक्ट्स, एंड वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन देम, लाइक इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, व्हाई डोंट यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच वन टीच वन. लेकिन हम लोग सारा दिन सिर्फ रिलीजन के नाम पे लड़ते रहते हैं. Fine. So in that case, if we are responsible and if we persuade government to become responsible, the system can reform. Now, if you see, there are so many questions in this lesson. Now this is your part. We are done with the lesson. I have explained each and every aspect of the chapter in detail. And still if there is something, we have a doubt clearing session. You can ask me there. But now the ball is in your court. And what do I mean by this? That the ball is in your court. Now you need to practice this questions and answers. You will write it in your notebook and we'll discuss the answer in the next class. Thank you. We'll meet again in the next lecture.